डेली एससी लर्निंग। तो मैं संदेश राठौड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। उससे पहले हम जान लेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस। तो आप डेली लाइफ में यूज करते हो वर्ड की माई स्कूल इज 3 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम माई home. That means suppose this is your school and this is your and this is your home, and distance between these 2 points is, that means the gap between these two, the smallest gap between these 2 points is 3 किलोमीटर। ओके, तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, तो वी हैव सम फॉर्मूला हियर। तो फॉर्मूला कैसे आने वाले आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ऐसे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन एक्स वाई प्लेन। तो सपोज दिस इज माय एक्स वाई प्लेन, दैट मींस दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। सपोज आई हैव 2 पॉइंट ऑन अ एक्स एक्सिस, दैट मींस दिस इज योर एक्स एक्सिस। अगर मेरे पास 2 पॉइंट है, सपोज फर्स्ट पॉइंट इज हियर एंड सेकंड पॉइंट इज हियर। ओके, तो कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट ऑफ ए एक्सिस क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज क्या हो जाएगा? This is 1 2, okay, 2 0, y axis is 0, okay, on x axis, therefore your point is on a axis, x axis, therefore your y is 0. And what is this? This is 1 2 3 4 5 6, this is 6 0। तो आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्टली आप फाइंड कर लेंगे 6 minus 2, this is equals 4। the distance between these 2 point is 4। ये तो हो गया a to b डिस्टेंस। हाँ, और फ्रॉम बी टू ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दिस इज आल्सो 4, देयरफॉर डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बी ए। डिस्टेंस फॉर्मूला in Cartesian plane. Okay, that means suppose I have 2 point in any 2 point on a Cartesian plane, that means this is my first point and this is my second point. Okay, and I want to find the distance between these 2 points. Okay, I just want to find the distance between these 2 points B. Okay, so coordinate of A क्या हो जाएगा? Coordinate of A is x1 y1. What is the coordinate of B? x2 y2. Okay, suppose we draw a perpendicular from passing through point B. यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन पासिंग करते हुए ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। आल्सो वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, देन दीज 2 लाइंस मीट हियर। ओके, यहाँ पे मीट हो रहे, देन वी गिव नेम एज सी। सपोज दिस पॉइंट इज आवर सी पॉइंट। तो यहाँ पे देख लीजिए गाइस, we get a triangle ABC and this triangle is making a right angle triangle. Okay, तो आपको पता है, if you have a right angle triangle then you can use a Pythagoras theorem. तो उसके लिए क्या चाहिए? The gap between AC, that means distance AC and distance BC. तो आपको पता है distance AC is a parallel to the x axis, so this distance is, and okay, so this distance is, तो पॉइंट सी क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज, दिस इज x2, somewhere here is x2. okay, okay, this is x2 and y1, point y1. तो this distance between AC is directly x2 minus x1. okay, and distance between these 2 point is, this is y2 minus y1. Now you use the Pythagoras theorem here. Okay, so Pythagoras theorem says that, Pythagoras theorem क्या बताता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट मींस AC स्क्वायर is equals to AB square plus BC square. Okay, we want to find a distance between A to B. Okay, sorry, here is a
So Pythagoras theorem says that AB square hypotenuse square is equals to AC square plus BC square. Okay, so यहाँ पे देख लीजिए, we want to find the distance between AB. Okay, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम Pythagoras theorem यूज करते What is AC? Distance between AC is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, now taking square root on both sides, we get AB is equals to under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 bracket square. That is your distance formula. Okay, this is your distance formula. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी इज अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. ओके, ये तो हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला. Now we discuss one example here. So we have a 2 point. Point A is minus 1 1 and point B is I think point B is we choose 3 and 4. Okay, that means your x1 y1 is minus 1 1 and x2 y2 is 3 comma 4. That means we plot these 2 points on a graph paper, that means xy plane. तो यहाँ पे देख लीजिए, first point is minus 1 1, therefore your x axis, on x axis you get a minus, therefore this is your negative x axis, therefore so here is minus 1. Okay, and y is also 1, therefore first point is your A. This point is A. अभी B देख लेंगे, B is 3 comma 4, that means your 3 on x axis, that means 1 2 3 on x axis and 4 on y axis. I think it is here. Okay, and this is B point, therefore 3 comma 4, and this is A point minus 1 comma 1. So now we want to find the distance between these 2 points, and we know formula D is equal to under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. तो हमें अभी डिस्टेंस फाइंड करना है these 2 point. तो डायरेक्टली यूज कर लीजिए, व्हाट इज योर x1 is minus 1 and what is your y1 is 1, x2 is 3, y2 is 4. Just to put the value in the formula, we get distance AB, that means D is equals to AB. This is equals to under root, what is x2 is 3 minus of minus 1 whole square plus 4 minus 1 whole square, and this is 3 minus of minus 1 plus, therefore this is 4 square plus 4 minus 1 is 3, therefore this is 3 square. ओके, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस D is equals to 4 square is 16 plus 9, and this is equals to under root 25, but under root 25 is equals to 5. Okay, under root 25 is equals to 5. So distance is 5. You can say this is in meter. Distance you can measure in meter, centimeter or kilometer. We here may take centimeter. So distance from A to B is 5 centimeter. Okay, actually distance formula is a application of Pythagoras theorem. That means your distance AB is equals to hypotenuse. तो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन क्या बोल रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस. ओके, हाइपोटेनियस. आप यहाँ पे देख लीजिए, सपोज आई एक्सटेंड दिस लाइन फ्रॉम हियर टू हियर एंड दिस हियर टू हियर, वी मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर दिस इज योर हाइपोटेनियस एंड दिस इज योर. सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए.